topic is simultaneous elections. We can call it as one nation, one election system as well, and we know that how much it is in news these days. So we are going to see this topic in very brief, so that it is only beneficial for our answer writing and essay. Fine. So first of all, let's see the historical background. See, it's not a new concept that we are discussing that simultaneous election should take place or not. Earlier also, India has witnessed simultaneous elections, like a country's first general election that was held in 1951 and 52. 1951 and 52 में जो election हमारा पहला हुआ था, वो साइमल्टेनियस जनरल इलेक्शन ही था. एक साथ लोकसभा और असेंबली के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्शंस थे वो एक साथ ही हुए थे. जब लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस एक साथ होते हैं उसे ही हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस कहते हैं. तो ये जो ट्रेंड था साइमल्टेनियस इलेक्शंस का, ये 1951 से 52, दैट मीन्स पहले इलेक्शन में हुआ, देन 57 में भी यही रहा, फिर जब 62 में इलेक्शंस हुए तो भी ये रहा, एंड 67 में भी. लेकिन 1968 में एंड 69 में जो साइकिल थी, दिस गॉट डिस्ट्रक्टेड. वाई? बिकॉज ऑफ द प्री मेच्योर डिसोल्यूशन ऑफ सम ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज. कुछ लेजिस्लेटिव असेंबलीज का पहले ही डिसोल्यूशन हो गया था, दैट्स वाई. और साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या कहते हैं कि लोकसभा एंड असेंबली के इलेक्शंस एक साथ होने चाहिए. इसी वजह से लाइक दिस सिमिलरली इन द ईयर 1970 it was a turn of the Lok Sabha that it itself got dissolved prematurely. मतलब 1970 में लोकसभा पहले ही डिसॉल्व हो गई. ठीक है, तो कभी असेंबली डिसॉल्व हो गई, कभी लोकसभा डिसॉल्व हो गई. तो जो पूरा हमारा जो कंसेप्ट था, जो सिस्टम था simultaneous election का, that broke out. So as a result of premature dissolution and extension of the terms of Lok Sabha and state assemblies, the cycle of simultaneous elections got disturbed. Fine. Ab, in case at present, if suppose simultaneous elections has to take place, then what are the different kind of constitutional amendments that needs to take place? And the question can be that, is there any need for any sort of constitutional amendment? So the constitutional amendments that would be needed are like in the Houses of Parliament, Article 83, which deals with the duration of Houses of Parliament, then Article 85, which deals with the dissolution of Lok Sabha by President. Then likewise 172 and 174 in state legislatures. Apart from that, some changes needs to be made in precedent, this concept of precedent rule as well, because if suppose there is precedent rule in any of the this state, okay, then what happens then? Not immediately, but later on after some time, if precedent rule is approved by both the houses of parliament, then the assembly gets dissolved. So in that case also we can see that the concept of simultaneous election that can be disrupted, right? Because लोक सभा चल रही होगी, but उस स्टेट में because of precedent rule जो आपका जो पूरा टर्म होगा वो ब्रेक हो जाएगा. फाइन. देन इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल लाइक 1951 में भी चेंजेस करने पड़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू द फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर फॉर बोथ पार्लियामेंट एंड assemblies. Now, apart from that, one should also know that what are the different countries, which are the different countries that are conducting simultaneous elections at present. Fine. So India is not a new country, or India is not a new country which is basically conceptualizing this simultaneous elections. So Sweden, Indonesia, South Africa, Germany, Spain, Belgium, Poland. Fine. All these countries, they are having this system of simultaneous elections. Fine. Now, again, the important thing is what are the pros and cons. So I have not written here I have not written that merits are these or demerits are these, but this particular thing we can write fine in our answer. So I have written in this way. The first thing is that suggestion for holding simultaneous election was made time and again as supporters argue. जो supporters होते हैं, those who support this simultaneous election, they say that it would ensure consistency, continuity and efficiency in the governance. This is, I have made this bold because this is a one-line statement which can be quoted, that what is the benefit of simultaneous election? That it would bring consistency, continuity and efficiency in the governance. Now, the different points are, first of all, see, whenever the election has to take place, then there is a model code of conduct.
fine, during election times. And that model code of conduct, it impacts the entire development process, because the political leaders cannot make, the radical changes in the policies, and in the administration as well. So somehow the policies implementation and development programs get affected because of the model code of conduct, fine. And if suppose there is election in Lok Sabha, then after few months there is election in one or the other state, fine. Then this model code of conduct is virtually present at all the times. So this can impact the development programs. So this is the first point. Second thing is, if we are having simultaneous elections, it would curb corruption and build more conducive socio-economic system, because we know elections are associated with what? Corruption, role of money, muscle, and power. So it would this entire thing would be curbed if the elections are taking uh, all elections are taking one at a time. Then, as we know that election expenditure is rising steadily in India, elections have unfortunately become the root cause of corruption and black money. This is with respect to this point. Third is, there are various stakeholders involved in holding elections, like for conducting elections, need of security personnel, government teachers, etc. All are required. So even on the administration front, frequent elections, they pose a huge burden on resources, both manpower and financial. So the opportunity cost of these lost resources is too high to ignore, as India is a resource constrained developing economy. So like if we are having simultaneous elections, so there would be optimal utilization of resources with respect to manpower and with respect to finance, fine. Next point is disruption. Because of continuous elections taking place, there is disruption of public life with political rallies and noise pollutions as well, fine. Environment point of view se bhi ho gaya. Next is the sharpening of caste, religious, and communal divide by dishonest politicians looking to garner votes would increase due to recurring polls. We know that this caste, religion, and communal lines, these are being utilized to mobilize people in politics. So if there are frequent elections, so these kind of disruptions, these kind of divisions which are created by politicians in the name of caste, religion, and this communal lines, they somehow disrupt the social fabric in our country. So अगर एक ही बार इलेक्शन होता है तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी. तो ये आप कुछ मेरिट्स में लिख सकते हैं, ठीक है, या प्रोज में लिख सकते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस के. नाउ लेट्स कम टू डीमेरिट्स. डीमेरिट्स की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट थिंग इज, सी दिस इज वन लाइन which we can quote in demerit. Holding simultaneous polls might be desirable. ऐसा हो सकते हैं, हम उसको डिजायर कर सकते हैं, बट अगर हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या रियलिटी से देखें तो दैट इज नॉट पॉसिबल. फाइन. व्हाई? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल, सी, it is observed that elections for state assemblies and Lok Sabha are fought on different issues. So regional parties target local issues while national parties target national issues. So if simultaneous elections are taking place, so there is a possibility that regional parties, they will not be able to raise the local issues, fine, because then people would be viewing national issue as a whole, and that would hijack the local agenda and the local issues, fine. Second thing is, regional parties will not be able to compete with national parties. और अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो रीजनल पार्टीज जो होंगी दैट वुड नॉट बी एबल टू कॉम्पीट विद नेशनल पार्टीज इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन एक्सपेंडिचर एंड इलेक्शन स्ट्रैटेजी, फाइन. तो एक तरीके का लॉस हो जाएगा रीजनल पार्टीज को. और इसको अगर एक तरीके से रिलेट किया जाए, अगर जहाँ पे भी रीजनल पार्टीज अगर सबऑर्डिनेट हो रही है नेशनल पार्टीज से, तो वहाँ कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो एक फंक्शनल एस्पेक्ट होता है डेमोक्रेसी का या पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमारा उसका लॉस हो जाएगा. बिकॉज रीजनल पार्टीज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली इन अ हेट्रोजेनस सोसाइटी लाइक इंडिया. इसको अगर एलैबोरेट करना हो तो. नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स भी आएंगी, क्योंकि वन टाइम इलेक्शन जो है इम्पॉसिबल है एक तरीके से डेमोक्रेटिक सेटअप में जो हमारी कंट्री का है. सपोज इफ simultaneous elections are conducted, but we are not sure that all states and जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, मतलब जितनी भी स्टेट्स की गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो फुल मेजोरिटी के साथ ही आएगी.
अगर फुल मेजोरिटी के साथ नहीं आती है तो कोलिशन में आएगी। एंड कोलिशन की गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो मोस्टली जो है वो अनस्टेबल होती हैं, तो किसी भी टाइम पे अगर वो जो गवर्नमेंट है वो टूट जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, गवर्नमेंट गिर जाएगी एंड वहाँ पे फिर से इलेक्शंस करानी पड़ेंगी। सो इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट सम पार्टीज मेक अलायंस गवर्नमेंट विच कैन फॉल एनी टाइम बिफोर 5 years, सो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन इन द होल कंट्री। अगर ऐसा हुआ, अब होता क्या है कि अगर किसी एक असेंबली में या दो असेंबली में ऐसा हुआ, अब अगर कंसेप्ट साइमल्टेनियस इलेक्शन का ही लेकर आते हैं तो फिर पूरी कंट्री में इलेक्शंस कराना पड़ेगा, चाहे नीड हो या ना हो, ठीक है। And as we know that India is the largest democracy in the world, so इंडिया ऑलरेडी हमें पता है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड में, तो ये साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने वाला काम जो है बहुत ही ज़्यादा डॉन्टिंग और बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई एंड टास्क हो जाएगा। एंड लॉ कमीशन, ये दीज थिंग्स वी हैव टू कोट इन आवर आंसर कि लॉ कमीशन के अकॉर्डिंगली इफ द कंट्री goes for simultaneous election, then election commission need to spend rupees 4500 crore on new EVMs, फाइन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, इतने करोड़ रुपीज़ हमें उसमें स्पेंड करना पड़ेगा। एंड एक सर्वे के अकॉर्डिंगली देर आर 77% चांसेस दैट इंडियन वोटर विल वोट फॉर द सेम पार्टी फॉर बोथ द स्टेट एंड सेंटर व्हेन इलेक्शंस आर हेल्ड साइमल्टेनियसली। अगर इलेक्शंस एक साथ होते हैं तो ऐसे 77% चांसेस हैं कि इंडियन वोटर जो है सेम ही पार्टी के लिए वोट करेंगे, ठीक है। वही वाली बात कि लोकल इशू कहीं ना कहीं हाईजैक हो जाएगा। तो वन नेशन वन पोल एक गुड आइडिया है इंडियन पॉलिटी के लिए, लेकिन इसकी फिजिबिलिटी हमें इट नीड्स टू बी थॉरली एग्जामिन्ड बाय इन्वॉल्विंग ऑल द स्टेक होल्डर्स इन डिबेट एंड डिस्कशन, एंड जिसमें कि रीजनल पार्टीज एंड जो स्टेट्स का जो मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्सो द डिजायर्ड गोल ऑफ हैविंग वन इलेक्शन एवरी 5 years कैन नॉट बी अचीव्ड ओवरनाइट in the prevailing circumstances. It has to be achieved in stages. So like way ahead में we can quote many of the things कि ये phased manner में होना चाहिए, कि कुछ states के साथ में हम ऐसा कर सकते हैं कि simultaneous elections ले लें, ठीक है, या फिर हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि we can have like assembly और जो लोकसभा के जो elections हैं वो कुछ time duration के साथ में हो, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत हम way ahead quote कर सकते हैं, और ये जो conclusion दिया है ये we can quote in our answer, and thank you.